resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. Hello friends, I, Shreyans Kothari, welcome you all to the YouTube channel of S. Chand Academy. In this channel, we usually provide you video solutions of the published books so that these videos complement the book. You just need to scan the QR code and yes, you are there. We are trying to make that old saying true, किताबें भी बोलती हैं. Generally, we follow a simple pattern to all these videos. We just make you understand the simple concept or the basic concept behind the topic. And then we try to solve some of the question from the book. This video can be seen standalone also because this video in itself is complete to clear the doubts. Talking about this book, man, this is the Quantitative Aptitude by S. Chand. One of the best books you can find for this particular section in the country. Why so? Because I guess this is the most comprehensive book available as it is regularly updated. The new questions are added and you name an exam, you will find this book appropriate. Why so? It is for bank, SSC, railways, MBAs, hotel management, sub-inspectors, UPSC, you name it and it is there. So for quantitative aptitude, even for the campus recruitments, students follow this book. And I guess this is the most comprehensive book of all. And I guess the oldest one. Why I am saying oldest one? Oldest one with the updated one. So you don't have to go anywhere else, just stick to this book. So without wasting time, let's move to the chapter. So we move on to chapter number 26, that is races and games of skill. दोस्तों ये एक अलग chapter है, ये एक exciting chapter है. नाम से ही लग रहा है boss, races and games of skill. What is exactly races and what is games of skill? See, in real time we play a lot of games, a lot of sports. उन sports से related बहुत सारे questions आते हैं. उन गेम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम एक एक करके चीजों को समझते हैं. First thing first, we need to know the theory about it, we need to know the concept about it. We'll learn the concept and after that we'll rock the floor, right? So let's learn the theory first. Let's grab the concept first. So important facts. What are the important facts? First is race, a contest of speed. Running, riding, driving, sailing और rowing is known as race. मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रेस क्या है. रेस आप सभी को मालूम है. रेस वो दौड़ है जिसमें हम सभी दौड़ रहे हैं. यहां पे जो रेस की बात हो रही है, रनिंग हो सकती है, राइडिंग हो सकती है, ड्राइविंग हो सकती है, सेलिंग हो सकती है, रोइंग हो सकती है. एनीथिंग जहां पे स्पीड का कॉन्टेस्ट है, स्पीड में कौन आगे रहता है, कौन स्पीड को बढ़ाता है और कौन फर्स्ट आ जाता है. सो दैट इज ऑल अबाउट रेस. रेस कोर्स, अरे भैया रेस कोर्स, ये रेस कहीं ना कहीं तो होगी ना. वो जगह जहां पे रेस होगी इज नोन एज रेस कोर्स. द ग्राउंड और पाथ ऑन विच कॉन्टेस्ट आर मेड इज नोन एज रेस कोर्स. सो फर्स्ट इज रेस, सेकंड इज रेस कोर्स. दैट मींस एक तो रेस हो रही है, हम गुड़ 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 दौड़ रहे हैं, और सेकंड है दोस्तों वो जगह जहां पे आप दौड़ रहे हैं, दैट इज रेस कोर्स. तीसरा वर्ड इज स्टार्टिंग पॉइंट. द पॉइंट फ्रॉम विच अ रेस बिगिंस इज नोन एज स्टार्टिंग पॉइंट. अब इसमें बताने वाली बात क्या है, आप सोचेंगे तो बहुत सिंपल है, अरे भाई मैं भी यही कह रहा हूं. द ओनली थिंग इज दीज आर द वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज वी शुड नो. जहां से रेस शुरू हो रही है उस जगह को रेस स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं. विनिंग पॉइंट और गोल समटाइम्स. द पॉइंट सेट टू बाउंड अ रेस इज नोन एज विनिंग पॉइंट और अ गोल. बाउंड अ रेस, भैया आप दौड़ना शुरू करें, दौड़ते 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 चले जाओगे, अरे भाई कहीं तो बाउंड्री लगाओगे, कहीं तो रुकोगे. उस रुकने वाली जगह पे जहां आपका रेस खत्म होता है, जहां रेस एंड होता है, उसको कहते हैं हम विनिंग पॉइंट, दैट इज गोल. विनर, द पर्सन हु फर्स्ट रीचेस द विनिंग पॉइंट इज नोन एज विनर. सीधी सी बात है, सभी दौड़ रहे हैं, सभी दौड़ रहे हैं, वो पर्सन जो सबसे पहले विनिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, दैट पर्सन हु रीचेस द गोल फर्स्ट इज नोन एज विनर, राइट? डेड हीट रेस, ये भी एक कंडीशन होती है बॉस. डेड हीट रेस क्या होता है? If all the person contesting a race reach the goal exactly at the same time, then it is said to be a dead heat race. एक ऐसी रेस जहां पे भैया सब दौड़ने वाले हैं और दौड़ने वाले सभी के सभी
एक समय पर विनिंग पोस्ट पे पहुंच गए, क्या होगा? डेड हीट रेस कहलाएगा, राइट? कुछ और टर्म्स है जिनको और डिटेल में हम समझते हैं। स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। क्या है ये? देखिए, सी सपोज ए एंड बी आर टू कंटेस्टेंट, दो कंटेस्टेंट, दो दौड़ने वाले, दो रेस कर रहे हैं। इफ बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रेस, रेस के शुरुआत में ए इज एट स्टार्टिंग पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है बॉस, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से शुरू कर रहा है। सो जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। सो ए कहां पे है? स्टार्टिंग पॉइंट पे है। बी इज अहेड ऑफ बे बाय 12 मीटर। कभी कभी ऐसा भी होता है, यार तू एकदम थोड़ा कम चलता है, कमजोर है, चल तू मेरे से 12 मिनट पहले, 12 मीटर आगे निकल जा। सो समटाइम दैट हैपेंस कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ए है और बी 12 मीटर अहेड है, यानी 12 मीटर आगे है उससे। Then we say that A gives B a start of 12 meters. यानी A ने B को 12 meters का start दिया है. So A has given B a start of 12 meters. To cover a race of 100 meters. Now 100 meters की रेट को, रेस को कवर करना है. A will have the cover of 100 meter and B will have to cover only 88 meters. Why? भैया वो 12 meters आगे है, तो अब इसके पास टोटल 100 meters में से 12 कैंसिल हो गए हैं, ओनली 88 meters आर लेफ्ट टू कवर। एंड दिस पर्सन जो शुरुआत पे खड़ा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे है, ही हैज टू कवर 100 meters। इन अ रेस, रेस में क्या हुआ? A कैन गिव B 12 meter और A कैन गिव B a start of 12 meter और A beats by 12 meter, means that while A runs 100 meter, B runs 188 meters। क्या हुआ? देखिए, या तो हम कह सकते हैं A can give B 12 meter, A can give B a start of 12 meter, सेम है दोनों के दोनों। A beats by 12 meter, A beats by 12 meter का मतलब है जितने समय में A 100 मीटर रन किया, B 88 मीटर रन किया, क्योंकि उसने बीट किया 12 मीटर से, वो 12 मीटर आगे था, पहुंच गया था विनिंग पॉइंट्स पे, और जो पीछे वाला था वो 88 पे था। He beats B by 88, 12 meter, that is 88 meter only. Games. A game of 100 means the person among the contestant who score 100 points first is the winner. एक ऐसा गेम जहां पे आपने पहले 100 points बनाए हैं, you are the winner, right? If A score 100 points and B scores only 80 points, then we say A can give B 20 points. सीधी बात है भैया, A के पास 20 points extra है, so A can give B 20 points. That means he won by 20 points. So इतना सा जो बेसिक मैंने आपको बताया, एक एक चीज को याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में यही थ्योरी पार्ट में आपके साथ लेके आऊंगा। आपको क्या करना है बॉस? आपको तैयारी करना है। ये टॉपिक अगर एग्जाम में आ रहा है, अच्छे से तैयारी करिए। आप एक काम बहुत सिंपल सा करिए, अभी के अभी बॉस इस वीडियो को शेयर करिए। रेसेस एक पार्ट है जो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में आता है, और अगर आता है बॉस तो रेसेस के नाम से नहीं आता है। अब देखेंगे कई सारी बार एसएससी में भी आता है, राइट? व्हाट यू नीड टू डू इज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। उनको बताओ बॉस ये भी एक टॉपिक है, तुम्हें पता नहीं था, मैंने बताया है। बी द फर्स्ट वन टू शेयर इट, राइट? एंड अगर बॉस अभी सब्सक्राइब नहीं किया है इस चांद पब्लिकेशन को, अभी सब्सक्राइब करिए। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हियर वी गो। So we start with question number 1. In a 100-meter race, A covers the whole distance in 36 seconds and B in 45 seconds. In this race, A beats by B. A beats B by kitna? Let's see kitna. Okay, so it is a 100-meter race. A covers the whole distance in 36 seconds and B in 45 seconds. So B took 9 seconds extra, right? B took 9 seconds extra. That 9 second extra is, you can say that A beat B by 9 seconds. Yes, because A ने B से 9 seconds पहले कर लिया. So A beats B by 9 seconds. So in terms of seconds, we have 9 seconds. Now, for that 9 seconds, B कितना चल लेगा? That is the main question. भाई B उन 9 seconds में कितना चल लेगा? So now we know it that speed is equal to distance by time. Now we have to find distance.
So distance is equal to speed into time. Just multiply this t into s. Now what is the speed? Speed is 100 meter per second, that is 45 seconds, and it took 9 seconds. So what about 9 seconds, right? So this is 5 times, this is 0, and this is 20. So he took 20 meter. So A beat B by 20 meter. That is for sure, you can say. So is there any option like 20 meter? Yes, it is. So question, when you say A beat B by 9 seconds, A beat B by 20 meter in meters, right? Okay, let's move on to the next question. Question number 3 for you all. Let's see what does it say. See, A can run 22.5 while B runs 25 meter. In a kilometer race, B beats A by, let's see, kitna hota hai? So B runs 25 and A runs 22.5, right? So when we say like B is to A, that means we can do like 25 is to 22.5. That we can say. Let's simplify a bit better. So this is 25, this is 22.5. 22.5 into 2 is, I guess, 45. So 45 by 2. 25 is like 5 times, and 45 is 9 times. So it's like 5 into 4.5. Now this is a 1000-meter race. So we need to do like 1000 here. So if we 5 into 200 here and 200 here, so we'll do like 1000 is to 4.5 into 2 is 9, so it's 900. So when he goes 1000 meter, he just goes 900 meter. So B beats A by 100 meter. Is there any option? Yes, it is. Oh, sorry. 100 meter. Why so? Because he goes 22.5, he goes 25. If it is a kilometer race, we should convert this into a kilometer. So 25 when converted into kilometer, that is multiplied by some 200, we got 100 meter. The difference is 100 meter. So B beats A by 100 meter. Here we go. We go to the question number 5. It is SSC CGL Tier 1 exam. So it is, as I told you earlier, this comes in exam. You must take care of it, right? A team played 40 games in a season and won 24 of them. What percent of game played did the team win? So we need to find out the win percentage. I don't think this will be a big challenge for you, because see, if you win 24 out of the 40 game and you need to know the percentage, just 24 divided by 4, that is 6 times. 6 into 10 is 60. So 60% is the winning percentage. That many you won, out of that many you played into 100. इतना simple question है. SSC का 1 नंबर का question है दोस्तों. 1 नंबर भी important है. हर question important है, ये ध्यान रखें. चलिए हम बढ़ते हैं आगे. That is question number 10 for you all. 10 is in a kilometer race. Again, it is a kilometer race. In a kilometer race, A, B, C are 3 participants. Great, no issues. A can give B a start of 50 and C a start of 69. Great. The start which B can allow C, let's see what happens. See, if A goes 1000, right, then B just goes 950. Why so? Because 50 meters ahead, that is start of 50 meters. That means if A goes 1000, he goes 1000 minus those 50, because वो जो B है वो 50 meters आगे है. Now C कितना आगे boss? C is like 69 meter. So 1000 minus 69 is 1. Then 100 minus 6, 99 minus 6. So 9 minus 6 is 3. Then 931. So C gives 931. Now you need to find out that how much B can give to C. Because अगर मैं B के point से देखूं, if I can say that B is at starting point, now how much is C ahead of B? So total is 950
and you just subtract 931. So you get 9 over here, then 5 का 4 हो जाएगा, 4 minus 3 is 1. So 19 meter. B can allow C 19 meter. That is the only way. So this is again a SSC question, previous year question, and you must know how it goes. You should know what exactly the question is telling you. क्वेश्चन आसान आता है, हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता इसलिए हम आंसर नहीं कर पाते. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको ओवरकम करना है हमें धीरे धीरे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12 for you all. So in a 100-meter race, now this is a 100-meter race. A beats B by 10. A ने B को 10 मीटर से हराया. C by 13 meter. Great, no issues. In a race of 180 meter, B will beat C by what? I don't know. So in this point we can do is, see, A ratio B, that is 100 and B is 100 minus 10, that is 90. So 100 is to 90, that is A is to B. Now A is to C. In a 100, A beats B by 10 and A C by this. So A is to C. A is to C is 100 is to 87. That you know it very well, right? Now what is asked? It is asked B will beat C by. So ultimately, I have to calculate B by C. See, we have got A by B here. We got A by C here. Do just one thing. First reciprocate it. पहले तो इसको reciprocal कर लो. तो भाई इसको B into A कर दो. इसको जब मैं A into C से multiply करूंगा, it will get cancel out. Yes. So अभी इसको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं. B upon A की वैल्यू क्या है? 9 is 90 into 100. So it is 90 by 100. और A by C की वैल्यू क्या है? 100 by 87. So here we go, 100 by 87. पहले तो इसको 0 मिटा देते हैं. It's like 900. So this becomes 90 by 87. Because this 0 gets cancelled out. So 90 by 87. Now B is to C is 90 is to 87. Now what is asked? Let's see the question again. Question says that now this race is of 180 meter, right? So if this race is of 180 meter, we have to convert this into 180. Why so? See, जब हमने 100 से निकाला था तो हमने easy पता चल गया था कि 100 से वहां easy जाना है. अगर मैं 180 की बात करता हूं तो एक काम करो, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना बॉस. इसको 180 हो जाएगा, ये तो प्रॉब्लम नहीं है. इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 7 into 2. 7 into 2 is 14 का 4 carries 1 2. 8 2 is 16 and 1 17. So 174. Now this 180 and this 174. You should know that if he goes by he goes to 180, he goes 174. B beats C by 180 minus 174, that is 6. So B beats C by 6 meter. Is there any option like 6 meter in the question? Yes, we do have. See, generally you will see that options are very good in this question, because in this book generally there is 5.4, 4.5, so that you get confused कि भैया ये point में आ रहा है, मेरा आंसर डायरेक्ट आ रहा है क्या, सही आ रहा है क्या. Don't worry, आप अगर सही मेथड से कर रहे हैं, for sure आपका आंसर सही आ रहा है. Just do it. Let's move on to the next question. Here we go. Question number 15. In a 200-meter race, A beats B by 35 or 7 seconds. So 200 meter का race है और he beats B by 35. So A is to B हो जाएगा आपका 35 minus करना है 165. That you can do. 7 seconds. So 8 time over the course. A का time कितना होगा ये आपको पता लगाना है. So this is the ratio for A is to B. Just leave it here. Now you see that A beats B by 35 meter or 7 seconds. That means in those extra 7 seconds, B just moved 35 meter, right? I say it again. In those 7 seconds, B just moved 35 meter, right? Because, so in those 7 seconds, so I can say that
B covered 35 meter in just 7 seconds. But the race was not of 35 meter. The race was total of 200, right? So we can say that for 200 meter, B moved what? 7 by 35 into 200. Why 200 से multiply? Because see 35 चलने के लिए उसको 7 seconds लगे. So 200 चलने के लिए कितना लगेगा? 7 डिवाइड बाई 35 कर लेंगे, 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. पहले इसको इजीली कैलकुलेट कर लीजिए बॉस. This is 5 and this is 40. So B took 40 seconds to complete the race. B took 40 seconds to complete the race. Now A beat B by 7 seconds. A ने B को 7 seconds से हराया. So if B took 40 seconds, A took less than this. So A took, let's say for example 7. So 40 minus 7. So A took 40 minus 7 seconds. That is 33 seconds. Now this is what is asked. They asked you how much time did A take. Let's see, this is there any option like 33 in the question? Yes, it is. So very simple. हमने क्या किया? B का टाइम निकाला जो कि 7 seconds में 35 मीटर जाता है. 200 मीटर में कितना जाएगा? So 200 मीटर का हमने seconds निकाल लिया. So B को total 40 seconds लगा. Now B तो 7 seconds से हारा है. So B को अगर 40 seconds लगा, A को इससे 7 कम लगा, that is 33 seconds और वही question में पूछा है. That is simple. Okay, let's move on to next question. Question number 17 for you. A runs 2 by 3 faster than B. If A gives B start of 80 meter, how far must the winning post so that A and B might reach at the same time? Now, इस बार कुछ अलग question है. भाई आपको ये कह रहा है A पहली बात तो इतना तेज दौड़ता है फास्ट B से. A गिव करता है 80 मीटर ऑल्सो. अब आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस रखा जाए सो दैट दोनों सेम टाइम पे पहुंचे. याद होगा डेड हीट रेस, राइट? सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस स्पीड का रेशियो, speed, this is 1.12 by 3 times, so it is like 1 2 by 3 times of B. So B को हमने 1 मान लिया. Now if you calculate this first, 3 1s are 3 plus 2 5. So 5 by 3 is to 1. That means 5 is to 3 is the ratio of their speed. Speed का ratio आ गया है 5 is to 3. So if the speed का ratio is 5 is to 3, that means, and this speed is equal to distance upon time. So speed is directly proportion to time. So if I say speed is directly proportion to distance, not time, distance. If I say the ratio of speed is 5 is to 3, that means the ratio of distance is also 5 is to 3. If he gains 2 meter when he goes 5, right? When he goes 5, he gains 2 meter, right? So 2 meter when he goes 5. So B was ahead of 80 meters. So in 80 meters, how much? See, अभी वो 80 meters पीछे है, तो अल्टीमेटली दोनों को वहां पहुंचने के लिए ये 80 मीटर का गैप ही तो फिल करना है. इस 80 मीटर के गैप को फिल करने के लिए ए को कितना चलना पड़ेगा? सो 5 by 2 into 80, राइट? सो इसको कर दीजिए 40. 5 into 40 is 200. सो 200 मीटर पे अगर गोल पोस्ट रखा जाएगा तो वो इस 80 मीटर के गैप को फिल कर देगा. भाई वो जब 5 चलता है ना, वो 2 मीटर का गैप कवर कर लेता है, बिकॉज ये जब 5 चलता है वो 3 चलता है. यही उनके स्पीड का रेशियो है. स्पीड का रेशियो मतलब डिस्टेंस का रेशियो. फिर से एक बार समझ लीजिए, ये 5 का रेशियो 3 रेशियो कैसे निकाला? बिकॉज A is 1 2 by 3 times of B. ये क्वेश्चन में गिवन है. इफ दिस इज गिवन, सो 3 1s are 3 and 2. 5 by 3 is to 1. सो 5 is to 3 का हमने रेशियो निकाल दिया स्पीड का. स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस. सो जब ये 5 मीटर चलता है, ये 3 मीटर चलता है, मतलब 2 मीटर का गेन ये 5 मीटर में निकाल लेता है. सो ये 2 मीटर का गेन 5 मीटर में निकाल लेता है. दैट मीन्स 80 मीटर जो ये डिस्टेंस है, डिफरेंस है, उसको कैसे निकालेगा? 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 80. दैट मीन्स 200 मीटर का गैप होना चाहिए.
So is there any option of 200? Yes, we do have. Here we go. Move on to the next question. Question number 21. Let's say, what does it say? The question says that in a kilometer race, A beats B by 30 seconds. So, 30 seconds बोला ना. So, if say for example, A को A seconds लगता है, so B को कितना लगेगा? B को you know it very well, A plus 30 लग जाएगा. A plus 30 लग जाएगा, no issues. Now, B beats C by 15 meters, 15 seconds. So, B के आगे अगर मैं चलूँ 15 seconds, that means C की value हो जाएगी B plus 15. Now, what is B? B is A plus 30. So, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A plus 45 seconds. यहाँ तक तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. If A को A seconds लगे, B को obviously 30 seconds ज़्यादा लगेंगे और C को 45 seconds ज़्यादा लगेंगे. Great. Now, if A beats C by 180 meter, problem is solved. See, ये जो 45 meter extra हैं, उसको cover करने में उसको 180 meter लगेगा, right? 180 meter के लिए we have 45 seconds. So, if it is for 1000 meter, 1000 meter के लिए we have 45 divide by 180 into 1000 meter. भाई अभी जो ये 180 मीटर लेफ्ट है ये 45 सेकेंड्स के लिए हैं. सो 1000 मीटर इज लाइक दिस. नाउ जस्ट कैलकुलेट दिस. सो इट इज लाइक 4 into 9 into 5 and then it is 9 into 20. 9 to 18. 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए. 5 by 2, इसको एक काम कर लीजिए, 550 दे दीजिए. सो 250 seconds. 250 seconds is the time for 1000 meter for C. C takes 250 seconds. So if it is like C is equal to 250 seconds. Now what is asked? The question asked is time taken by A. We need to find out A. So A is, we know that C is equal to A plus 45. So C is equal to A plus 45. So A is equal to 250 minus 45, that is 205 seconds. 205 seconds because C की वैल्यू A plus 45 है. मैं A को इधर रखता हूँ, 45 को इधर माइनस कर लेता हूँ, C की वैल्यू 250 डाल देता हूँ. C की वैल्यू 250 है, so 250 minus 45 is 205 seconds. Is there any option? 205 seconds? Yes, we go. So this is the way you need to do. Simply understand the question for what exactly the question is asking, then do the question. Let's move on to the next question. We have question number 25, that is the last question. At a game of billiards, A can give B 15 points and A can give C 20 points. So A can give B 15 points in 60. So if A is 60, then B is 15 minus, that is 60 minus 15 is 45. Now A can give C. So A is 60, then he can give 20 points. So 60 minus 20 is 40 points. So this is the ratio of A is to B, this is A is to C. Now how much B can give C in 90? So we need to find out for the 90, right? Do one thing. First thing first, if I do A by B into A by C, नहीं काम चलेगा, मिटा दो इसे. B by A and then we'll go A by C, तब तो काम चल जाएगा ना, because A gets cancelled out. So इसको अगर मैं ऐसे बोलूं, B by A, that is 45 by 60, और इसको मल्टीप्लाई करना है 60 by 40 से. So do one thing, 60 कैंसिल कर लो. इसको आप अभी 45 by 40 ही रखो. Why? Because the question is asked, now the new game is of 90 points. So this must be 19. B को 90 कैसे करेंगे? Just multiply these two by 2. So it is 90 is to 80. So how much points 90 can give it to 80? What is the difference? Difference is 10. So this B
can give 10 points to a C. So answer is 10 points. Is there any option like 10 points? Yes, we do have. So हमने देखा एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, एक टोटली डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट, जहां पे एक एक क्वेश्चन को हमने समझा, किस तरीके से हमने रेसेस को और गेम्स ऑफ स्किल्स को हम लेके आए। यही आपको एग्जाम में भी करना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से आते हैं, इजी टॉपिक है, मस्ट डू इट टॉपिक है, मस्ट डू इट। अच्छे से अच्छे आगे से आगे शेयर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल एस चांद अकेडमी। थैंक यू एंड टेक